domain. So I'll not take much of the time. I'll hand over to Anjali ma'am so that she can share her valuable experience and enlighten your academic path. Good Over to morning, you, Anjali everyone. ma'am. Good morning, everyone. So let's not waste any time and let's start with like what all is data analytics about. So I'm just sharing my screen. I hope you all can see my screen right now. So what is analytics as such? And it is like a very buzzing word right now. Everybody is talking about data analytics. Everybody is talking about artificial intelligence. Everybody is talking about machine learning. And we are a little scared of it actually, because we think that this is like something which is very, very technical in nature and has to be very, very coding oriented type of things. So let's understand what is analytics as such and how it is used in today's business dynamics. First of all, we will start with what is data. I suppose I am audible to everyone. Yes, Anjali, it's good to go. Okay, fine. You can use Hindi and English mix, so audience is mixed with us. Okay, fine. So I will talk about what is data, and if I am going little fast, please let me know. So we can see data everywhere. What is data all about? We always think that data is only numbers. It is not like that. We have data in different forms. It is the information present around us in different forms. First of all is like numbers, text. An example of text is like, for example, WhatsApp messages or SMS messages, which you are sending or you are receiving. That is also information and that is also data. Videos. Whatever videos are there, they're on YouTube, on social media, on WhatsApp, on different platforms. This is also providing an information and this is also one of the form of data. ऑडियोज जो हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो दिस वेबिनार इज ऑल्सो गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन. दिस वेबिनार इज ऑल्सो क्रिएटिंग डेटा. तो ये भी डेटा का एक फॉर्मेट है. ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, नंबर्स, फोटोग्राफ्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, इवन जीपीएस लोकेशंस. जो हम जीपीएस लोकेशंस यूज करते हैं while finding out data. I suppose because you all are from BCA or BBA background, so you must be knowing how GPS works. हम ही सैटेलाइट को अपनी डिटेल्स भेजते हैं और वो ही सैटेलाइट वापस रिफ्लेक्ट करता है और हमें बताता है कि आगे ट्रैफिक है कि नहीं है. So GPS locations are also one of the form of data. And data can be in the form of quantitative or qualitative. आप सबको पता होगा क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है और क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है. क्वांटिटेटिव मीन्स quantity, like numbers, etc. are quantitative data. For example, I have 10 pens. So I am having a quantity as 10. So that is a quantitative data. And what is qualitative data? That is quality of data. For example, videos or photographs. They show that what is the quality of data. So that is the qualitative data. You can easily differentiate between quantitative and qualitative. Quantitative is which can be measured, and qualitative is like good quality, bad quality, low quality, average quality. That type of things are called as qualitative data, which cannot be expressed in numbers as such. So you can see the data in the form of geographical, cultural, scientific, financial data, statistical data, even weather data is also a form of data, natural data,
data related to plants, data related to animals, data related to your, for example, mountains, topography. So that is also a form of data. Transport, GPS data, and other things, geographical data we have already discussed. What are various sources of data? Why everybody is talking about data from last few years? Why it is like a hype right now, and why, like for example, because you all are so young, but around 10 to 15 years back, nobody was talking about data. What is the reason of so much of data around us? So the major reason for so much of data around us is like usage of mobile phones, usage of smartphones, usage of social media. Everything is created a lot of data. For example, in good morning messages, like I receive one good morning message in the morning at around 8 a.m. sorry, और उसी मैसेज को मैं 50 लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ. वो 50 लोग उस मैसेज को, हर कोई 50-50 लोगों को फॉरवर्ड करता है. So we are creating so much of data with that one good morning message. So just be aware when you are forwarding your messages and other things, just take care that you are not creating a junk data. जितना भी data अभी all over universe जो होता है generate, 60 to 70% is junk data. Fine, only 30 to 40% is useful data. And out of that 30-40%, only 20-25% is used for analysis. Otherwise, balance is not even used for analysis. So what are the sources of data? There are multiple sources of data. Common sources are, like I told you, social data, tweets, video uploads, machine data, data generated from machines, like for example, your electric meter, that is also creating data. There are medical devices, smart meters, road cameras, etc., which are generating so much of data. ट्रांजैक्शनल डेटा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ करते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, कोई इनवॉइस जनरेट करते हैं, अमेज़न पे पेमेंट करते हैं, that all is called as transactional data. And we are generating a lot of transactional data because right now we believe in digital money. We are not using cash as such. We are using digital money, and that is creating a lot of data. This all leads to big data. So these are the major sources of big data. What is big data? Everybody is talking about big data. So big data is just a huge amount of data that is called as big data. Nothing to worry about, nothing to think like big data is like very scary. No, it is not. But the thing is, what percentage of that big data is useful data or is a good data? That is important. What are the characteristics of big data? Big data की क्या-क्या characteristics होती हैं? I suppose you must be aware of the data is collected in the form of bits. What are bits? Because you all are BBA or BCA students. We all have studied about it in class 8th, 9th. So binary figures 1 and 0 that are called as bits. That is the unit of data. Fine. So the lowest unit of data is bit. That is either 0 or 1. And now it has changed from, and like for example, आप सबको याद होगा कि आप लोग पहले पेन ड्राइव यूज करते थे. तो आप जब पेन ड्राइव यूज करते थे तो हम बोलते थे कि हमें 100 GB की पेन ड्राइव चाहिए, एंड दैट इज अ बिग पेन ड्राइव, उसमें बहुत सारा डेटा आ जाएगा. फिर धीरे धीरे जीबी की जगह टेराबाइट्स टीबी में कन्वर्ट हुआ, दैट इज टेराबाइट्स. अब everybody is talking about yottabytes. And how big is yottabyte? So 1 bit is equals to 1 binary digit, that is 0 or 1. And 1 byte is equals to 8 bits.
मुझे लगता है कि ये सब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है ये सब, बट फिर भी जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पसेस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डेटा को कैसे मेजर करते हैं। और डेटा पिछले कुछ सालों में नॉर्मल डेटा से बिग डेटा कैसा हुआ, डेटा इज ऑलवेज देयर। अगर हम आज से 5,000 साल पहले का भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा होगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो थी, बट अमाउंट ऑफ डेटा इज लेस। लेकिन अभी why it is converting into big data, that I have already told you, because of social media, everybody is using smartphones. सबके पास दो दो स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल, everybody is having their individual smartphones, and we are doing lot of activities on our smartphones. So that is the reason of creating lot of big data. 1 KB is equals to 1000 bytes. Actually, it is not 1000, it is 1080 byte. But for the ease, now we are using 1 KB as 1000 bytes. And I told you we talk about 1 megabyte, that is 1000 KB. Then comes up GB, which is 1000 megabytes. And then comes terabyte, which is 1000 GB. So you can understand how much data is there in 1 TB. Fine. Then comes petabyte, which is 1000 terabytes again. Then come exabyte, which is again 1000 of petabytes. And then comes zettabyte. Everybody, like say around last year, we were talking about zettabytes. But now we are talking about yottabyte. Yottabyte is 1000 of zettabyte. So it is how many zeros as such? So 1 followed by 24 zeros. Bytes. So this is how big the unit is. So 1 yottabyte is a big unit as such. 1 multiplied by 10 to the power of 24 bytes. That is called as yottabyte. And 90% of the data is collected in last few years only. What are the characteristics of big data? Volume. We are having huge volumes. Big data is having huge volumes. Variety is like different formats of data. It can be text data, it can be audio, video, it can be GPS data. So variety is there. Value. The important part of big data is that it must be having a value. If 90% of big data is a junk data and is having only 10% of usefulness, then it is not called as big data. Velocity, high speed. Like I told you, I have got one good morning message in the morning, और मैंने उसको 50 लोगों को फॉरवर्ड किया, और हर 50 लोगों ने, हर पर्सन ने उसको आगे 50 लोगों को फॉरवर्ड किया. So that is the speed, and it is hardly few seconds. So that is how data is getting collected these days. And veracity is whenever we work on data, it is like big data, it is having a lot of inconsistencies and uncertainty in data. It is not like a very consistent. ऐसा नहीं होता है कि जो डेटा आ रहा है वो यूनिफॉर्म डेटा आ रहा है. You have to, while working on data, you have to find out कि उसमें क्या uncertainty है या क्या उसमें गलतियां हैं. वो सब हम जब डेटा पे काम करते हैं तो we have to find out. Now, what is analytics? We know what is data. Data is information. And what is analytics? It is the process of discovering, interpreting, and communicating significant patterns in data. हमारे पास डेटा आ गया, मेरे पास एक सुपर स्टोर है, उसका डेटा है से अराउंड 10 lakhs कस्टमर का डेटा है. लेकिन उस डेटा का क्या फायदा है अगर मैं उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करती हूँ, मैं उसमें से डिस्कवर नहीं करती हूँ कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, मेरे स्टोर में नहीं है और मुझे अपने स्टोर में वो लानी चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी सेल्स देखती हूँ एक सुपर स्टोर डेटा की और मुझे दिखता है कि सुबह के टाइम लोग सिर्फ ब्रेड, बटर, मिल्क, जैम ये ही खरीदते हैं, I have to find out patterns out of it.
तो मुझे अपना फोकस मॉर्निंग के टाइम उस स्टोर में इन प्रोडक्ट्स पर ही रखना चाहिए। बट वो ये सब तभी आप कर सकते हैं जब आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे। अगर आप वो डेटा है आपके पास और कुछ यूज नहीं करें, इट इज जस्ट लाइंग देयर विच इज एक्चुअली हैपनिंग। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगह, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कॉर्पोरेट्स, डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल मीडिया, उसमें से हार्डली एनी डेटा इज गेटिंग यूज, हार्डली 60 to 70% ऑफ डेटा इज गेटिंग यूज्ड, और उसमें भी जंक डेटा होता है काफी। सो दिस इज द पावर ऑफ एनालिटिक्स। अगर आप एनालिटिक्स करते हो, डिस्कवर करते हो, उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, और उसमें से सिग्निफिकेंट पैटर्न्स ड्रॉ करके अपने बिजनेस में, अपने काम में अप्लाई करते हो, दैट इज द एडवांटेज ऑफ data analytics and making business decisions out of it. Quite simply, we can see analytics is like generating insights. It is the answer of what happened. क्या हुआ, क्यों हुआ, कल क्या होगा, और कल जो आज गलत हुआ वो कल गलत ना हो, उसके लिए मुझे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। This is all analytics about. What happened? क्या हुआ? Why it happened? क्यों हुआ? What will happen? आगे क्या होगा? And what should I do next to prevent the wrong decisions I made earlier? Fine. This is all analytics about. यही पूरा analytics है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, I'll give you an example. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, तो आप बताते हैं कि मुझे फीवर है, मेरा गला खराब है, सर दर्द है, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। फाइन। So this is called as descriptive analytics. You are describing what is happening to you. So that is called as descriptive analytics. अब डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको बुखार है, ये सब है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कुछ गलत खाया था, कुछ आपने कहीं पर कोल्ड वेदर में चले गए, ऐसे करके आपसे डॉक्टर क्वेश्चंस पूछता है, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। फाइन। डायग्नोज करता है डॉक्टर, तो दैट इज दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डॉक्टर आपको दवाई देता है, ठीक है, बताता है कि आप अगर दवाई नहीं खाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या होगा, प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और उसके लिए आपको दवाई देता है कि आप ठीक हो जाएं, प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको दवाई का, दैट इज कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। So there are 4 type of analytics. Basic analytics is जो already हो चुका है, उससे हम निकालते हैं, that is called as descriptive analytics. Why it happened? क्यों हुआ? Diagnostic analytics. What will happen? Predictive analytics. And what should I do next is prescriptive analytics. जिससे जो past में अगर कुछ गलत हुआ है या better performance के लिए हम improve कर सकते हैं, that is called as prescriptive analytics. Most of the organizations all across are using descriptive and diagnostic, and some are using predictive. But prescriptive analytics is used by very, very few people as such, as of now. I'll again tell you what is descriptive analytics. I have given you an example. मैंने आपको ऐसा example दिया जो आप सबको easily समझ में आ सकता है. This is the most common and simple form of analytics. अगर आपके पास कोई डेटा है अपनी, for example, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों का स्कोर है आपके पास, उनका जो लास्ट ईयर का स्कोर है वो आपके पास है, and you are finding out the average. You are finding out what is the average score of the class. You are finding out what is the mean, median, mode type of thing. You are finding out standard deviation. You are finding out frequencies. So that is called as descriptive analytics. ये सबसे simple type of analytics होता है और इसमें basic statistics use होती है.
मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ लैपटॉप है, आई एम यूजिंग डेल, सो जो लोग डेल का लैपटॉप खरीद रहे हैं उनकी एनुअल इनकम क्या है, जो लोग मैक बुक खरीद रहे हैं उनकी एनुअल इनकम क्या है, ये अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस इनकम ब्रैकेट के लोग ये लैपटॉप खरीदते हैं, इस इनकम ब्रैकेट के लोग ये लैपटॉप खरीदते हैं या फोन खरीदते हैं. सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, उसी से हम पता कर रहे हैं. तो जब हम अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट कि हमें किसको, किस सेगमेंट को फोकस करना है. Sales of SKU in superstore, I told you right now. Pattern of leave taken by employees. कुछ लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हर महीने की फ्राइडे को लीव लेते ही लेते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई इट इज हैपनिंग. तो हमारे पास डेटा है, वी हैव टू ड्रॉ पैटर्न आउट ऑफ इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट. जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक. बट सिर्फ अगर हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. इट आंसर्स व्हाट हैपेंड, कितनी बार हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ. सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ऑल अबाउट. Am I clear up till now? If anyone feels that there is some question or something like that, you can raise your hands right now. Otherwise, I'll move forward. Fine. Then comes diagnostic analytics. Descriptive analytics सबसे easy form of analysis है. Diagnostic उससे ज्यादा complex होता है, क्योंकि हमें diagnose करना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है. अगर आप बीमार हैं तो व्हाट इज द रूट कॉज, क्या आपने कल ठंडा कुछ खाया था, दैट इज द रीजन. So what we do, how do we do diagnostic analytics? We make a lot of dashboards out of it. And in dashboards, we drill down the data. हम data की deeply अंदर तक जाते हैं and can find out कि क्या reason है, किस वजह से ये हुआ. We can at least draw patterns out of it and can find out what is the reason why something wrong is happening. Or if we are having a very good sales, for example, मैं अगर अपने स्टोर का ही आइडिया देती हूँ आपको, एग्जाम्पल लेती हूँ, तो बहुत अच्छी सेल होती है कुछ पर्टिकुलर डेज में. तो आई वांटेड टू फाइंड आउट उन पर्टिकुलर डेज में क्यों इतनी अच्छी सेल होती है, सो दैट आई कैन रेप्लिकेट दैट फॉर अदर डेज ऑल्सो. मैं और दिनों में भी उस आइडिया को रेप्लिकेट कर पाऊँ, कॉपी कर पाऊँ. So diagnostic analytics diagnoses issues based on data relationships, identifying patterns and discovering anomalies in the data to help user answer questions. क्या questions हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है. So that is the use of diagnostic analytics. It answers why it happened. Then comes predictive analytics. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना. जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, एन इजी एग्जांपल ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज वेदर फोरकास्ट. हम हमेशा जब भी न्यूज देखते हैं तो वी ऑलवेज सी कि वो बताते हैं कल बारिश होगी या कल यहाँ पर सैंडस्टॉर्म आएगा. हाउ डू दे एनालाइज दैट? बहुत सारा डेटा होता है पास्ट का और पता होता है कि आज ये ह्यूमिडिटी है, आज ये विंड की स्पीड है. डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल, डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स आर अवेलेबल. by calculating everything through that, weather department forecast that.
फाइन। पहले वेदर फोरकास्टिंग बहुत सालों से हो रहा है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग एज सच, बट पहले आपने पहले के और अभी में ये डिफरेंस किया होगा कि पहले के जो वेदर फोरकास्ट होते थे दे आर नॉट वेरी करेक्ट एज सच, बट राइट नाउ इन दीज डेज बिकॉज ऑफ हाई टेक डेटा कलेक्शन, हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है 95% ऑफ दैट इज करेक्ट. It is not like earlier days. It is all about forecasting. Forecasting मतलब भविष्य बताना. जो probability जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि it is like the likelihood of an event happening in future. And we have to make different type of models while doing predictive analytics. It am I audible? Yes, Anjali. Yes, you are audible. Yes. Annie, please ask your question. Yeah, please. Annie, you can ask your question, please. Yes, ma'am. Ma'am, I understand all things very clearly, but one question is arises in my mind. Ma'am, आपने कहा था कि there are four types of analytics and the diagnostics, descriptive, predictive and prescriptive. आपने बोला था कि both three are used for everyone, but one is called prescriptive is not used for everyone. Why, ma'am? Yeah, please, can you come again? There was some network issue at my place. Please come up again. Okay, ma'am. Annie, आप मैम एक बार- आपने चार मैम आपने चार एनालिटिक्स को अभी डिफाइन किया था. आई अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स वेरी क्लियरली because diagnostic Okay. analysis I understand why it's in happens and what's happened as a descriptive analytics. मैम आपने एक बात बोली उसमें कि diagnostic analytics या prescriptive, predictive और descriptive both are used for everyone but prescriptive is not used for everyone. Why, ma'am? मैं अभी आऊंगी, उस वहां तक पहुंचने दीजिए अभी मुझे. Okay, ma'am. Okay. Fine, Annie. Okay. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I understand. Yeah. So can you see my screen? Can you see my screen? Yes, Anjali, it's there. Okay, fine. There was some network connection at my place, so that is the reason I really got disconnected. Yeah. So what is prescriptive analytics? Like I told you that prescriptive analytics is like what has happened, why it has happened, and a variety of what might happen. क्या हो सकता था या क्या हो सकता है अगर हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे.
Annie, you asked a question why prescriptive analytics is not happening, because it is very very complex in nature. अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो we feel that it is very very easy, but it is like it involves high amount of data, it involves high amount of technology, uh, very very analytical mindset, usage of data in a proper way, so that all things are required. Most of the corporates, most of the companies, or most of the government organizations right now are using descriptive analytics. Descriptive में क्या हुआ, जो past में क्या हुआ, उससे हमने निकाल लिया कि ये हुआ, हमने ये प्रोजेक्ट थे, इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है कि अगर हमें इतने गांव में लाइट पहुंचानी थी तो हमने पहुंचा दी. लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव इज लाइक जिन गांव में आप नहीं पहुंचा पाए उनको करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी. सो इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. इट इज नॉट लाइक दैट कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कोई नहीं कर रहा है, कर रहे हैं लोग, लेकिन एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक इट इज लेस. क्योंकि आपको पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करना होगा, फिर डायग्नोस्टिक करना होगा, फिर प्रेडिक्टिव करना होगा, and then only prescriptive analytics will work. Fine? Yeah, ma'am, I understand. So it is like very, very complex in nature. It answers what is the next best action, what will happen, when and why. क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा. दिस इज द आंसर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. जब आप दवाई खाते हैं, डॉक्टर बोलता है ना कि अगर आप ये 4 दिन का कोर्स कर लेंगे तो आप 5th डे आप बेटर हो जाएंगे, इतने टाइम में आप ठीक हो जाएंगे. बट अगर आपने नहीं किया वो, तो देन अगेन यू विल हैव फीवर और यू विल हैव हेडेक. So just I'm giving you an example of doctor and analytics because ये जो हम डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, आप बहुत इजीली टर्म्स को समझते हैं. हम सब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हमें, तो हमें पता है कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डायग्नोज कैसे होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है. सिमिलरली इट हैपेंस इन एनालिटिक्स आल्सो. सो इट इज इन अ वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज, बहुत ही नॉर्मल भाषा में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एनालिटिक्स के 4 पार्ट्स कैसे होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होती है. सो क्या होता है, आपके पास डेटा है, जैसे आपके पास कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स हैं, आपके पास एप्स हैं, ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं, कंटेंट के लिए सोशल मीडिया, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, मेटा, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो यू हैव लॉट ऑफ डेटा आउट ऑफ इट. कुछ आपको डेटा, ये सारा जो डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको उसके, अगर कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या अदर मीडियम से आपको लेना पड़ता है. दैट कैन बी न्यूज, इवेंट्स, इमेज डेटा, सोशल मीडिया, ताकि आपका डेटा कंप्लीट हो जाए. फाइन. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक डेटा दैट इज इन मोशन. कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमेशा बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे व्हाट्सएप के किसी पर्टिकुलर या कोई एक पर्टिकुलर फेसबुक के किसी इवेंट के लिए करना है डेटा एनालिसिस, बट वो डेटा रोज चेंज हो रहा है बिकॉज दैट इवेंट विल हैपन से अनदर आफ्टर 10 days. तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी. आप सब सुनते होंगे व्हाट इज आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. उसमें डेटा हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, या वेदर डेटा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज गेटिंग चेंज. जियो स्पेशल डेटा, अर्थ का डेटा, universe ka data, planet systems, that is all changing, that is in motion, that type of data is also available there. So complexity kaise hai, what happened, descriptive analytics is the easiest one, diagnostic is much more difficult than descriptive, predictive is much more difficult than diagnostic, and prescriptive is the most complex type of analytics. Fine. So I suppose I answered your problem. Whatever question you have asked, Annie, I have already answered that. Yes, Advantage ma'am, of I understand. analytics. Okay, fine. Because this is the last stage, so this is very complex. Yeah.
सो क्या Okay, क्या ma'am. एडवांटेज होते हैं एनालिटिक्स के, मैंने आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के भी एग्जांपल्स बताए. लेट्स टेक सम मोर सोफिस्टिकेटेड, सम मोर कॉम्प्लिकेटेड यूजेस ऑफ एनालिटिक्स. मेंटेनेंस सिस्टम, कोई भी फैक्ट्री है, जब आप लोग बीबीए या बीसीए में आप एनालिटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अगर आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हैं, अगर आप सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, बीबीए फॉर मेनली फॉर बीबीए स्टूडेंट्स, अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आप एचआर पढ़ रहे हैं, हर जगह एनालिटिक्स यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर मशीन का आपको पैटर्न पता है, आपके पास डेटा है कि ये इतने आउटपुट के बाद, फॉर एग्जाम्पल एन आउटपुट ऑफ से 1000 यूनिट्स, उसमें ये ऑयल डालना है. तो आपको पता है जैसे ही 1000 यूनिट्स का आउटपुट होने वाला, उससे पहले ही अगर आप ऑयल डाल देंगे तो आपकी मशीन बंद नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. आपने डेटा के, आपके पास डेटा था, आपने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि हमें कब उसमें ऑयल डालना है. सो दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज very very useful in factories and other things. इससे क्या फायदा होता है, आपकी कॉस्टली डाउन टाइम बच जाता है, रिपेयर कॉस्ट बच जाती है, जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है. ऐसे ही सेंसर्स हैं या मशीन्स हैं, अगर आप उनकी शेड्यूल मेंटेनेंस, जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस है विद पास डेटा, अगर आप उसको करते जाएंगे तो आपकी कॉस्टली रिपेयर्स, डाउन टाइम, ये सब रिड्यूस होगा. So that is the advantage of analytics. Inventory management. Inventory management, for example, I know that, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे पता है कि मेरे स्टोर में सुबह के टाइम सिर्फ ब्रेड, बटर, जैम, अंडे बिकते हैं. तो और अगर मेरे पास वो डेटा, उसका पूरा सामान नहीं है, आई डोंट हैव ब्रेड, बटर, और आई डोंट हैव एडिक्वेट स्टॉक विद मी, सो दैट इज लाइक आई एम नॉट यूजिंग माय डेटा प्रॉपर्ली. अगर मुझे पता है कि इस टाइम मुझे इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सो आई हैव टू मैनेज माय इन्वेंटरी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. दैट इज द यूज ऑफ एनालिटिक्स. एक कंपनी है BASF, इट इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. वो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करके उन्होंने बहुत पैसे बचाए. उन्होंने सेल्स का, प्रोडक्शन का, से जब हम हमारी कितनी सेल्स है उसके अगेंस्ट हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए. क्योंकि अगर आप सपोज आप एक इन्वेंट्री मैनेजर हैं और आपने इररिस्पेक्टिव कोई पर्टिकुलर यूनिट, सपोज 1000 कार्टन्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ले आए और आपने उसको एक जगह रख दिया अपनी इन्वेंट्री, अपने स्टोर में. अब आपका प्रोडक्शन जो है, वो प्रोडक्शन आपका सिर्फ हो रहा है 10 यूनिट का. तो आप उस 1000 में से सिर्फ 10 रोज यूज कर रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो जगह की कॉस्ट है वो आप स्पेंड कर रहे हैं. जो आपने स्टोर है, स्टोर का रेंट पे कर रहे हैं, या वॉट एवर द इन्वेंट्री कॉस्ट इज, बिकॉज आपको उसको मेंटेन करना है, उसके ऊपर आप कॉस्ट करें. जबकि आपका प्रोडक्शन सिर्फ 10 का हो रहा है और आपकी सेल सिर्फ 3 की हो रही है. BASF ने इसी तरह अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है 15% रिड्यूस की है. फाइन. इस तरह का डैशबोर्ड होता है जिसमें आपको पता होता है कि हमारे पास इतनी सोल्ड क्वांटिटी है, इतनी रिमेनिंग क्वांटिटी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे होता है. आपके पास वेंडर्स, आपको पता है कैटेगरीज, पता है प्रोडक्ट्स, पता है कितना सेल होगा, क्या प्रोडक्ट आपको कितनी क्वांटिटी में रखना है. दैट ऑल इज अवेलेबल, सो यू कैन use it. This type of dashboards are used for diagnostic analytics. Predictive maintenance, मैंने आपको अभी बता दिया predictive maintenance का. For example, a manufacturer operates a fleet of delivery trucks. एक मैन्युफैक्चरर है, उसका जो है डिलीवरी ट्रक्स उसके अपने हैं.
By analyzing data from the truck sensors, the manufacturer can identify when specific component are likely to fail. कब ब्रेक पैच फेल हो सकता है, कब टायर्स चेंज करने हैं, ये सब मेंटेनेंस अगर वो पहले से करके रखेगा तो उसका जो डाउन टाइम है वो कम हो जाएगा और कॉस्टली रिपेयर्स भी अवॉइड हो जाएंगी. शेंडलर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट. ये एक लिफ्ट बनाते हैं, फाइन, लिफ्ट और एस्केलेटर्स बनाते हैं. इन्होंने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से ही अराउंड 30% उनको पता है कि हमारी लिफ्ट यूज हो रही है, इतनी लिफ्ट्स के अप एंड डाउन के बाद उसमें ये रिपेयर होना जरूरी है या ये उसकी सर्विस होना जरूरी है. तो उसका डाउन टाइम मतलब वो खराब हो जाए और कस्टमर कंप्लेन करे उससे पहले ही वो वहां पर उसकी सर्विस कर देते हैं या वॉट एवर रिपेयर इज रिक्वायर्ड दे डू इट. सो इन दैट वे दे इंक्रीज और इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिपेयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. ये जैसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का डैशबोर्ड है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर पता है कि 2455 आवर्स के बाद होता है, टाइम बिटवीन फेलियर्स ये है, 70 घंटे काम कर चुका है 255, तो डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कब कब ये टाइम है और हमें इससे पहले ही उसको ठीक करना है. क्वालिटी कंट्रोल में भी हम बहुत एनालिटिक्स यूज करते हैं. क्वालिटी कंट्रोल में क्या फायदा होता है, इट हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग वेस्ट. अगर हमारी कोई प्रोडक्ट में कोई खराबी है और वो बाहर मार्केट में जाके इट विल क्रिएट अ बैड कस्टमर, उससे पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि हमारे ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है और हम उसको ठीक कर दें, तो दैट हेल्प्स इन हैविंग अ गुड कस्टमर रिलेशनशिप. So this is an example of like Mercedes Benz. आप सबने नाम सुना होगा मर्सिडीज बेंज का. वो लग्जरी कार्स बनाते हैं और वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल यूज करते हैं. उनको पता होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये चीजें हैं और अगर ये डिफेक्ट है उसको अगर हम अभी चेंज कर देंगे तो हमारे वारंटी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, सर्विस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. तो they apply analytics in their quality control. These type of dashboards are used for quality control. So I'm just giving you some examples from day-to-day life, from every perspective of business, from organization perspective, from a retailer perspective, from a factory perspective, or from operations perspective. So these are the examples of analytics. सप्लाई चेन में जैसे हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखा, ऐसे ही सप्लाई चेन में अगर मुझे पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में, मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ ए, और मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट ए जो है मार्केट में पहुंचने के लिए इसको 10 दिन चाहिए, और 10 दिन बाद जो, और मेरा जो लीड टाइम है, लीड टाइम आई सपोज यू ऑल अंडरस्टैंड, लीड टाइम होता है कि अगर सपोज प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, 10 का अगर प्रोडक्ट मेरे मार्केट में अवेलेबल है तो वो 4 दिन का के लिए सफाइज होगा, 5वें दिन वो प्रोडक्ट की फिर से डिलीवरी चाहिए होगी. तो मुझे पता है कि 5वें दिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए और 10 दिन मेरा फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक पहुंचने में टाइम लगता है. सो आई कैन प्लान माय सप्लाई अकॉर्डिंगली. सो दैट टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज कॉल्ड सप्लाई चेन, सो दैट मेरी कॉस्ट भी रिड्यूस हो, मेरा प्रोडक्ट टाइम से पहुंच जाए, और एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्सपायरी हो जाती है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट. So that all has to be taken into account. Those all variables are to be used while you are doing analytics. एग्जाम्पल है फ्लैक्स का. फ्लेक्स शायद आप सब लोग नहीं जानते हो. इट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट.
और ये अपने सप्लाई चेन के लिए यूज करते हैं। और अपने जब उन्होंने डेटा से अपनी सप्लाई चेन एफिशिएंसी से एनालिटिक्स यूज किया तो उन्होंने लीड टाइम जो है 50% इंप्रूव किया, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो है इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हुई और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। सो दीज आर रियल टाइम एग्जांपल्स। These type of dashboards are used for supply chain. And you must be thinking कि ये सब बनाना बड़ा difficult है, ये हम डेटा से इतना सारी चीजें हम कैसे बनाएंगे? We will make a dashboard right now and we'll see how easy it is. First of all, I wanted to know from you how many of you are using Excel. Just raise your hands. How many of you are using Excel? और आप कितने कंफर्टेबल हैं एक्सेल यूज करने में? अभी तक मुझे सिर्फ 3 लोगों ने बोला है कि दे आर कंफर्टेबल यूजिंग एक्सेल। 4 लोग। बाकी लोगों को एक्सेल यूज करना नहीं आता है? 5-6। ओके, फाइन फाइन, परफेक्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या आप लोगों को क्या आपकी एक्सपर्टीज है? हाउ मेनी नोज हाउ टू यूज एक्सेल ऑन अ बेसिक लेवल? आप में से कितने लोग बेसिक लेवल में एक्सेल यूज कर सकते हैं? ठीक है, and how many of you can use Excel on intermediate level? Intermediate level पे कितने लोग Excel यूज करते हैं? Just lower your hands first. Everybody please lower your hands. Anjali is connecting again. Just be there. I'm sorry, actually, some network issue, so I dropped down. Yeah, so I was just asking how many of you can use Excel on intermediate level? Just raise your hands. Okay, 1 person, 2, 3, 4, 5. Okay. So many of you knows how to use Excel. Today we will see how we can use Excel to analyze data and how to withdraw some actionable insights out of it. Fine. Just lower your hands, everybody. So how we can draw actionable insights from the data, whatever data we are having. There are 7 steps for that. क्या-क्या steps हैं? सबसे पहले आपके पास जो data उसको study करो first. Anjali, your screen is not visible. Can you please share it again? Okay, fine. I'll do that.
Can you see it now? Yeah, it is there. Thank you. Okay, fine. Okay, perfect. So, what are the various steps to convert data into actionable insights? First of all, see what the data is all about. Fine. Then find out what is the business problem. जब तक आपके पास डेटा है लेकिन आपको उससे पता नहीं है कि आपको इससे करना क्या है, you won't be able to do any analysis. आपको उस डेटा के साथ क्या करना है, क्या निकालना है, क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकालना है. That is step one. Just try to understand that. जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है उसका around 10 to 20% time goes in understanding the data. जो भी आपका डेटा है आप उसके हर वेरिएबल को देखो, उस वेरिएबल का मतलब क्या है. आपको जब कोई डेटा दिया जाता है एनालिसिस के लिए तो देयर इज ऑलवेज अ डेटा डिक्शनरी विद इट. फाइन. उससे आप वेरीफाई करो कि ये डेटा क्या बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम डेटा एंड इट इज रिटन फॉर एग्जाम्पल dt ऑन वन कॉलम. एक कॉलम पे dt लिखा है. जब तक मैं उस डेटा को देखूंगी नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि वो dt का मतलब डेट है. फाइन. So you have to understand the data first. Then उस डेटा को मुझे पूरा स्टडी करना पड़ेगा and I have to find out what is the business problem. Third step is I have to analyze, like step 2 is analyze data requirements. Data requirements मतलब हमें डेटा को क्लीन करना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पहली बात तो ये कि हमें क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा. जब हमने बिजनेस अभी मैंने जो थोड़ा सा मैं आपको अलग डायरेक्शन में ले गई. अभी हम जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास डेटा भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टोर ओनर. मैं एक स्टोर की ओनर हूँ और मेरा बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि मेरी सेल्स जो है मंथ के कुछ पर्टिकुलर डेज में ड्रॉप हो रही है. ये मेरी बिजनेस प्रॉब्लम है. अब मुझे उसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए होगा, मुझे वो एनालाइज करना होगा. जैसे मुझे उन पर्टिकुलर डेज का डेटा चाहिए होगा, मुझे उन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में क्या क्या सेल होता है उसका डेटा चाहिए होगा. उन डेज के अलावा जो और डेज हैं जिसमें सेल्स अच्छी होती है मुझे उसका भी डेटा चाहिए होगा. दैट इज माई डेटा रिक्वायरमेंट. फिर मैं वो डेटा कलेक्ट करूंगी. वॉट एवर इफ आई एम यूजिंग सम ऐप आई विल डू दैट. इफ आई एम नॉट यूजिंग एनी ऐप एंड आई जस्ट नो कि हाँ भाई ये मेरी ड्रॉप होती है सेल, लेकिन मेरे पास कोई डेटा कलेक्शन का कोई ऐप या कुछ नहीं है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल आइदर आस्क वन ऑफ माय ऑफिस पर्सन टू कलेक्ट द डेटा. जो सारे बिल्स बने हैं उसमें अगर टाइम आता है उनसे वो डेटा कलेक्ट करके उसको एक्सेल में डेटा कन्वर्ट करे. अगर कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो वो ऐप में डेटा कलेक्ट करे. फिर हम वो डेटा प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो मैनुअली एक्सेल में डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उन बिल्स के साथ तो वो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होगा. मुझे डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा एनालिसिस. हमारा जो भी डेटा एनालिटिक्स पर्सन होता है उसका जो भी डेटा एनालिटिक्स पर्सन होता है उसका मैक्सिमम टाइम डेटा प्रिपरेशन में जाता है. उस डेटा को प्रिपेयर करने के बाद वी विल विजुअलाइज द डेटा. हम उस डेटा को विजुअलाइज करेंगे क्योंकि अगर मेरे पास डेटा है 1,00,000 कस्टमर्स का एक्सेल में, उसका मैं मुझे देखने पे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है. उसको जब तक मैं विजुअलाइज नहीं करूंगी तब तक मैं एनालाइज भी नहीं कर पाऊंगी. सो आई हैव टू do data visualization out of it and then I have to analyze data. वहां पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे सेल डिप हो रही है, कौन से प्रोडक्ट की सेल डिप हो रही है. दैट इज डेटा एनालिसिस. उसके बाद जो मेरी जो फाइंडिंग्स होंगी डेटा एनालिसिस के बाद देन आई हैव टू डिप्लॉय दैट इन माय स्टोर अगेन. So that is the whole journey of using data into. Yeah, Aryan, please tell me. Aryan, you wanted to say something? Rajinder ji, Aryan has raised his hand. Fine. Okay. So this is the entire cycle of converting data into actionable insights. कैसे हम एक डेटा को insights में generate करते हैं. This is the entire journey.
Now we will work on Excel. एक डेटा है, मैं आपको दिखाती हूँ. उससे पहले I wanted to show you one movie. एक छोटी सी मूवी है. I'll show you that. Just give me a sec. Just give me a sec. I'm just connecting with you. My own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have. Can you all see my screen? Yes, Anjali. Okay, and can you hear? Can you hear also? Yes, it is there. Okay, fine. have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle. But there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China. I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes. Yes. So what we have seen is 200 countries data in last 200 years. Fine. So it is like so many variables are there, so much of data is there. And this is the power of visualization. You can easily find out which countries are getting prosperous, which countries are getting healthier, and what is the reason for that. Fine. So this is how analytics works, and this is how visualization work. Now I am again sharing my screen for, just hold on. Fine. So this is an Excel sheet and I am having a lot of data. I'll find out how much data is there. And this sheet is related to a superstore data. It is having sales of superstore of a Walmart. I suppose all of you must have heard about Walmart. Walmart एक बहुत बड़ा superstore है United States of America में. और ये रियल टाइम डेटा है, वहां का रियल डेटा है जिसके ऊपर जिसमें बहुत सारी फील्ड्स दी गई हैं. अभी हमारे पास डेटा है, हमें पता नहीं है कि क्या क्या फील्ड्स हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कैसे डेटा पे काम करना शुरू करते हैं, क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे डेटा को तैयार करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, एंड देन हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस डेटा. फाइन. सो लेट मी स्टार्ट विथ, so I have row ID, and if I will click over here, you can see on the bottom of the Excel, I am having average as average for row ID will doesn't make sense. The reason is हर रो की आईडी दी गई है जो कि एक यूनिक नंबर होती है, तो इससे इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. We are having numerical count as 9,994. Fine. 9,994 rows में data है. So let's see at the bottom. We are having 9,995
labeled in our rows as such 9,995, if you can see over here, but our first row is like labels. So we are having data for 9,994 customers or other things. Let's find out what it is all about. And then we are having order ID. So order ID, हर order की एक ID दी गई है. But if we will check, तो row first और row second में same order ID है. Can you see that? ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे रो नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. These all are having same order ID. तो इसका मतलब हर रो में अलग ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है? Let's check it. So we have to prepare data for that. So what we will do is we will just click on filter and we will just put a filter. जैसे अगर आप रो आईडी में अगर आप डालोगे तो आपको 1 से लेकर 9,994 है. It means there is no duplicacy. It's perfectly fine. ऑर्डर आईडी हम अगर देखते हैं तो हमने देखा कि डुप्लीकेसी है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नल वैल्यू या कहीं एरर नहीं दिखा रहा है. We have to check it through filter. Then we will click on order date. अगर हम ऑर्डर डेट में देखते हैं तो 2014, 2015, 2016 एंड 2017 4 साल का डेटा है ये. 2014 से शुरू होकर 2017 तक का डेटा है ये. एंड इफ वी विल क्लिक ऑन प्लस साइंस ओवर हियर इन फिल्टर्स, वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो दैट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल. तो डेट का मतलब 4 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है. वी कैन मेक अ नोट आउट ऑफ इट कि 4 साल का डेटा है ये, 2014 to 2017. अब हम देख रहे हैं शिपिंग डेट, बट शिपिंग डेट इज 2014 to 2018. 2000 हमारे पास सेल्स डेटा है 2014 से, ऑर्डर डेट 2014 से 2017, लेकिन जो शिपिंग डेटा है वो 2018 का भी है. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी विल सी इज we will just click on this. We will click on 2018 only. And we will see what this data is all about. तो अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर डेट जो है अगर 28 दिसंबर को है, लेकिन उसकी शिपिंग जनवरी में हुई है. फाइन. सो दैट इज द डिफरेंस. दैट इज द डिफरेंस. और लेकिन वो क्योंकि ईयर चेंज हो गया है इसलिए वो 2017 की जगह 2018 भी दिखा रहा है. एंड यू कैन सी इट इज फॉर एवरी, इट इज ओनली फॉर 1st जनवरी और 2nd जनवरी और 3rd जनवरी. फाइन. तो ऑर्डर तो 2017 में प्लेस हुआ, लेकिन शिपिंग जो है वो 2018 में हुई. दैट इज द डिफरेंस. सो डेटा इज करेक्ट. देयर इज नो फॉल्ट इन द डेटा एज सच. फिर है शिप मोड. वॉलमार्ट जो है इट इज लाइक Amazon. वो आपका ऑफलाइन भी सेल करता है और ऑनलाइन भी सेल करता है. ये जो हमारे पास डेटा है ये ऑनलाइन सेल्स का डेटा है. जब आपने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद शिपिंग हुई. शिपिंग मोड मतलब कोरियर किस मोड से भेजा गया. जब आप Amazon, आप लोग काफी लोग Amazon यूज कर रहे होंगे उसमें प्राइम डिलीवरी होती है, सेम डे डिलीवरी होती है, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं डिलीवरी के. ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, अलग अलग टाइप ऑफ डिलीवरीज, 4 टाइप ऑफ डिलीवरीज हैं. So we have certain details with us, like we have order date for 4 years, 2014, 15, 16, 17, but few orders which were shipped in the, which were ordered in the month of December in 2017 were shipped in January 2018. ये हमें पता है. 4 शिपिंग मोड है, ये हमें पता है. अब कस्टमर आईडी. सो दिस इज लाइक यूनिक कस्टमर आईडी. तो एक कस्टमर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार लेगा. एक कस्टमर साल में 5 बार, 10 बार, हर साल 20 बार अलग अलग टाइम पे परचेज कर सकता है. सो अगर हमें किसी कस्टमर का पैटर्न ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉलमार्ट में ऑर्डर करती हूँ और मैं वॉलमार्ट से एक पर्टिकुलर चीज ही ऑर्डर करती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 3 महीने में, हर 3 महीने में करती हूँ, तो वॉलमार्ट मुझे खुद नोटिफिकेशन देने लगेगा जब जैसे ही 3 महीने खत्म होने वाले होंगे कि आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है.
आपने ऐसा अमेजोन में भी देखा होगा, अगर आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी से भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और कंटिन्यूअसली करते हैं, तो वो आपको अलर्ट देने लगता है आपके मेल पे या आपके फोन पर कि आपका ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने का टाइम हो गया है. दिस इज डेटा एनालिटिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पर्टिकुलर ए सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये कस्टमर है एलेक्स, इसका नाम है एलेक्स एविला, फाइन. एंड उसने कब कब किया, 4 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया, फिर 7 जुलाई को किया, 5 अप्रैल को किया, 8 मार्च 2016 को किया, 20 सितंबर 2014 को किया. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उसने ऑर्डर प्लेस किया. लेकिन अभी हमें ऑर्डर आईडी क्यों रिपीट हो रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ. लेट्स फाइंड आउट दैट आल्सो, वी विल सी हाउ टू वर्क ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दिस. कस्टमर का नाम रिपीट हो सकता है क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे कर रहा है. देन वी हैव सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो देयर आर 3 सेगमेंट. एक है कंज्यूमर, जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर है, उसका सेग्रीगेशन किया हुआ, उसका सेगमेंटेशन किया हुआ है. एक है कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट आर ऑर्डरिंग थ्रू वॉलमार्ट, क्या ऑर्डर करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी. और कुछ है होम ऑफिस. होम ऑफिस इज लाइक, आई सपोज ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म नाउ, होम ऑफिस, बिकॉज इंडिया में शायद कोविड से पहले होम ऑफिस यूज नहीं होता था. होम ऑफिस मतलब जो घर से ऑफिस का काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो उन्होंने 3 तरह की सेगमेंट उन्होंने डिवाइड किया है. कंट्री, बिकॉज वॉलमार्ट इज अवेलेबल ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो दिस इज यूएस डेटा. सिटी, ये सारी सिटीज है यूएस की, फाइन. इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है, वी विल चेक इट आउट, वी विल फाइंड इट आउट हाउ वी कैन डू दैट. एंड दीज आर पर्टिकुलर स्टेट्स. पहले एक कंट्री है, फिर उसमें रीजन है, रीजन आई विल आल्सो शो यू, देन उसमें स्टेट्स है, एंड देन सिटीज है, फाइन. दीज आर पोस्टल कोड्स और रीजन है. यूएस में 4 रीजन है, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. देयर इज नो नॉर्थ रीजन इन यूएस, that is called as central region. So we have central, east, south and west. तो हमारे पास, हमें पता चल गया. अब मुझे अगर कुछ भी नहीं पता यूएस के बारे में, तब भी मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ आफ्टर स्टडीइंग द डेटा. देन आई हैव सर्टेन प्रोडक्ट आईडी. प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट की कुछ आईडीज है. कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. There are 3 categories of the product. One is furniture, one is office supplies, and one is technology. वॉलमार्ट 3 सेगमेंट्स को सामान सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट. क्या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है? फर्नीचर कैटेगरी के, ऑफिस सप्लाईज के और टेक्नोलॉजी के. उसमें सब कैटेगरीज भी है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू नो कि फर्नीचर में क्या बेच रहे हैं. जस्ट क्लिक ऑन दैट. So I will have bookcases, chairs, furnishings and tables. So Walmart in furniture category is selling bookcases, chairs, furnishings and tables. Fine. तो आप अलग अलग कैटेगरी का भी निकाल सकते हैं. और ये बहुत बड़ा डेटा नहीं है, दिस इज हार्डली 9,994 रोज. आपको लग रहा होगा काफी बड़ा डेटा है, बट डेटा जो होता है वो लैक्स एंड लैक्स ऑफ रोज. प्रोडक्ट के नाम क्या है? देयर आर सर्टेन नेम्स ऑफ प्रोडक्ट गिवन. देन दिस इज सेल्स. ये सेल्स दी हुई है. अगर आप देखोगे तो सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0.44 टिल 22,638.48. दिस इज इन डॉलर्स. ये हर प्रोडक्ट की सेल्स है इन डॉलर्स. देन क्वांटिटी. अब हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट की सेल्स है डॉलर्स में. क्वांटिटी नंबर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 0 हो नहीं सकता, अगर 0 है तो वो ऑर्डर ही नहीं हुआ. एंड मैक्सिमम नंबर इज 14. फ्रॉम 1 to 14 इज द क्वांटिटी. दैट इज आल्सो परफेक्ट. अगर ये डेसिमल में होता 3.5, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग समवेयर इन द डेटा. देन वी हैव discount. So you can see discount varies from 0 to 0.8. What does that mean? 0 से 0.8 तक है, पॉइंट में ही है डिस्काउंट. तो ये यूएस डॉलर्स में तो हो नहीं सकता. 0.1, 0.2 यूएस डॉलर्स का डिस्काउंट नहीं होगा. You have to find out, you have to think about it, what it is all about. So discount is in percentage.
So what I will do is I will select this, go to this and convert it into percentage. Fine, because discount is always in percentage. Now we will see profit. Profit is starting from minus 6599 till 8399.976. So first of all, this is not a percentage because these are numbers. So this is in US dollars again. But why we are having in minus 6599.978 minus 3839.9904? It means जब हम ये डेटा को स्टडी करेंगे तो we will check and we have to apply our logical mindset कि जो नेगेटिव में है वो लॉसेस हैं. उसको उन्होंने टर्म प्रॉफिट दिया है, वो लॉस हो रहा है वहां पर जो भी नेगेटिव में है, और प्रॉफिट सिर्फ उनमें हो रहा है जो पॉजिटिव वैल्यूज. फाइन. So we have understood about our data. The only thing is we wanted to know why order ID is getting replicated. So we will just select this one. Wait. I will copy this and put a filter. Control V. Fine. So now I have this particular order. It is fine that this is placed on same order, has to be placed on same date and has to be shipped together. So it is 9/6/2014 and was shipped on 14th June 2014. That is perfectly fine. Shipping mode is also fine, standard class. Customer ID is same. Customer ID is not different. If customer ID is different or customer name is different, means some error with my order ID. So I have to correct it. Segment is consumer, US, city is fine, California. All these looks fine. The only thing is you can see that we have different products. He has bought 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 products in one order. Different orders. So that is the reason I am getting 7 rows of the same order ID. So it means each row is not unique, but each order ID is unique. Unique मतलब होता है कि वो ऑर्डर आईडी आपको रिपीट नहीं मिलेगी, रिपीट मिल रही है, एक ही ऑर्डर है वो, इसका मतलब. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट माय डेटा. एनी क्वेश्चंस? अभी तक जो हमने डेटा के बारे में डेटा को स्टडी किया, किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, प्लीज रेज योर हैंड्स. जिसको कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड्स. अगर आपको ये डेटा पूरा समझ में आ गया है अच्छे से, तो प्लीज अपने हैंड्स रेज करें. 1 person, 2, 3, 4, fast. 5, 6. What about others? 6 लोगों को समझ में आ गया है डेटा के बारे में, बाकी लोग ना को नहीं समझ में आया कि ये डेटा क्या है. 8. Fine, perfect. Lower your hands now. अब अगर मुझे इस डेटा में ये मेरा डेटा है, मुझे पता चल गया, मैंने इस डेटा को समझ लिया कि ये डेटा है, इसका मतलब ये है, इसमें ये चीज है. different things I have understood. Now if I wanted to know, for example, कि कहीं पर कोई सेल खाली तो नहीं है, empty तो नहीं है, so what I will do is I have certain features which are available in Excel. Excel is a very powerful tool. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि डेटा एनालाइज करना है तो उसके लिए कोई बहुत हमें अलग टाइप के टूल्स चाहिए होंगे. दैट इज नॉट ट्रू. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, लेकिन वेरी अंडर एस्टिमेटेड टूल है. लोग एक्सेल का यूज ज्यादातर डेटा एंट्री करने के लिए यूज करते हैं. दैट्स इट. I don't think so. I am an Excel expert, but still मुझे पूरा Excel नहीं आता होगा, और हर दिन कुछ ना कुछ Excel में नया ऐड होता रहता है.
सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्सन को पूरी एक्सेल आती हो, लेकिन अगर आप अच्छे से डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाइन, सपोज मुझे ये पता करना है कि कोई एम्प्टी रो तो नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज काउंट ए. काउंट ए से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आपकी फील्ड्स हैं वो भरी हुई हैं कि खाली भी हो सकती है उसमें, अगर काउंट कम आएगा तो. आई विल डू काउंट, I will apply that in formula cell. So I will just write down count A. जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, I will click on FX. फाइन, आपके पास काउंट ए आ गया. काउंट ए में आपको वैल्यूज चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा और एंटर करेंगे. आपके पास 9,995 रोज आ गई. फर्स्ट तो लेबल है, तो आई टेक इट फ्रॉम A2. So I have 9,994 rows which are filled. I will copy this and see that every row is having 9,994 rows. ये आपको इसलिए दिख रहा है ऐसा because this data is already clean data. Normally जो data आता है वो इतना साफ सुथरा data नहीं होता है. फाइन, अगर आप कुछ मिसिंग वैल्यू है कहीं पर नहीं है तो आपको उसका पता करना पड़ेगा कि उसमें क्या वैल्यू थी. जो आपका सोर्स है वहां से निकालना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू मिसिंग क्यों है, क्या वैल्यू थी. then you have to incorporate, and there are so many things in which you cannot incorporate that. We are not going for that right now. Fine. अब similarly I wanted to know कि हम बहुत सारे हमने फिल्टर लगा के पता कर लिया कि क्या है. अगर मुझे ये पता करना है कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट 50% से ज्यादा दिया गया है, तो हाउ विल आई डू. बहुत सिंपल है, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट. अगर मुझे सिर्फ ये पता निकालना है कि कितने सारे ऑर्डर्स पर 50% से ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट डाउन काउंट इफ. काउंट इफ इज आल्सो अवेलेबल. फाइन, and I will select the range P2 and criteria is greater than 0.5 or 50% because I have already converted into percentages. So I have 856 orders in which discount percentage is greater than 50%. Fine, you can change it to, say, for example, 75%. So it is 300. 300 orders are there, not order ID. 300 products are there which are sold on discount greater than 75%. So this is how you can use it. Similarly, when you are working on any of the numerical data, like for example, we have sales, quantity, discount, and profit as numerical data. Numerical means numerics. Fine. तो उसका आपको it is very important अगर आप उसका mean, median, mode, I am taking you for granted कि आपको mean, median, mode ये सब पता होगा. वो आप निकाल सकते हैं, उसमें पता कर सकते हैं कि क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है. इस तरह की चीजों के लिए we always use descriptive data. So what we will do is we will just select this and go to data analysis. In data, we have an option of data analysis. We have a tab of data. We have an icon over here. We go to data analysis. And then we will click on descriptive statistics, click on OK. What is my input range? My input range is this. Group by columns because we are having our labels on column. And
आउटपुट रेंज, हमें आउटपुट कहाँ पर चाहिए, उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज इसको, ठीक है, and click on OK, and I wanted to have my summary statistics. Labels in, I have to select labels in first row because I have my labels in first row. So you can see I already have for sales, my mean, my average is $229.85. My median is 54.59. My mode is 12.96. अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इन सब का क्या मतलब होता है. मिनिमम सेल कितनी है 0.44. मैक्सिमम सेल कितनी है 22,638. We have already seen that also. What is the sum of total sales? 2,97,200.86. Count 9,994. Similarly, we can see it for quantity, discount, and profit also. We can find out outliers also. So there are so many things which we can do with Excel. Now we will see how we can visualize this data, because अभी इतना डेटा से तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है. मुझे बस ये पता चल गया है कि इतने प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है. इज इट नेसेसरी कि अगर डिस्काउंट दिया है तो हमें लॉस ही होगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है जिस प्रोडक्ट पे मुझे 75% डिस्काउंट दिया है लेकिन उसका सेल्स प्राइस बहुत हायर था, तो हो सकता है उस पर मुझे तब भी डिस्काउंट ना हुआ हो, मुझे प्रॉफिट हुआ हो. फाइन. तो वी हैव टू फाइंड इट आउट हाउ इट इज वर्किंग. So what I will do is I will convert this into table. So I have selected entire data by Control A. I will click on Control T. And my data is having a header. I will select on this. Where is the data for your table already selected? And now I am having a table 1 as this format. So now I have converted my entire data into table. Have you all ever worked on pivot tables? Any one of you? Yes, Ayush, one. Ayushi, sorry. Other than Ayushi? Sanyog. Any? Fine. So you people know how pivot table works. So that's great. Fine. So we will insert pivot table. I have selected my table 1. So I am giving you just few examples. I am not making the entire pivot table out of it, entire dashboard out of it right now. I am just giving you some examples. For example, I wanted to know what is the sales in each category. So what I will do is I will select category and I will select say sales. Fine. So now it is very, very easy. I have in furniture, what is the amount of sales? In office supplies, what is sales? And in technology, what is sales? The advantage of using pivot tables is if there are certain changes in your main data, suppose this data is coming through an app and it is automatically getting populated in my Excel, then whatever changes or whatever additions are there, it will happen in my pivot table automatically because I have selected a table. अगर मैं टेबल नहीं बनाती और मैं उसको नॉर्मल तरीके से काम करती, तो अगर आप उसमें कुछ भी ऐड करते, then again you have to select for the pivot table. You have to work again and again. So it is always advisable कि अगर आपका डेटा डायनेमिक है, आपके डेटा में कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप हमेशा टेबल बनाइए पहले और फिर पाइवट टेबल पे काम करिए. पाइवट टेबल इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. फाइन. अब ये मैंने बना लिया एंड आई विल मेक अ पाइवट चार्ट.
So say I wanted to have a bar chart. Click on OK. Fine. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप पाइवट टेबल में काम करते हैं. I wanted to say reduce total. I wanted to have data label, not data table, even data labels. I wanted to have that. Wanted to reduce that. Change the colors. Example, I wanted to have it in this way. I wanted to change the color of this. I wanted to make it, say, instead of blue, I wanted to make it red. And this I wanted to have it as green. And this I wanted to make it yellow. Fine. So I have this graph. It is showing technology is having this much of sale, office supply is having this much of sale, and furniture is having this much of sale. Even if you wanted to drag your labels, you can do that. Data labels, just click, and I wanted to have it in center. Fine. So now I will rename this sheet as sales by cat. Sales by category. Fine. Now again, I will insert a pivot table in a new worksheet. And now I wanted to have, suppose, for example, you can play around with data. I will have segment, consumer, corporate, home office. And again, now we'll work only on sales right now. Fine. Sum of sales. So this is this, and I wanted to have a pivot chart. Let's have a pie chart. Fine. But I wanted to have, these are numbers, and it is important to have a pie chart with percentages. So what I will do is I will go to this field list and I will have sum of sales again. Fine. Now I have two sum of sales, and what I will do is I will click on this and click on value field settings, and I will have show values as percentage of total. Fine. So this is, I will rename it. Fine. Now I will refresh this. I will click on this and go to pivot chart, have pie. Okay. And I have sum of sales and sales of percentages. I can have data labels. I don't want to have chart. I don't want to have legends. And I want to have inside. I wanted to have percentage of sales also for my data labels. Value as percentage. I don't want to have values. I just wanted to have percentages. Can change the colors also as per my requirement. For consumer, corporate, and home office. Say for this,
I wanted to have color as, say, for this, I wanted to have color as fine. So I have sales by segment. Now I wanted to have, for example, sales by segment, but date wise. So I'll move or copy. And I will have the order date. Fine, and segment I will have over here. Let's remove this. Fine, so I have for 2014, I don't want to have percentage of sales also, so I will remove this field. I just have sales for 2014, 15, 16, 17, but I wanted to have month-wise sales. So what I will see is, if you will see when I have clicked on order date, now I am having years, quarters, months, and order date. I don't want exact order date. I don't want to have quarter. I just wanted to have years and months. So I'll click on this. There's a plus sign. It means you are drilling down the data. When there is a plus sign, if you click on it, आपको पूरे साल की एक वैल्यू दिख रही है 2014 की, बट मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो मैं प्लस साइन पे क्लिक किया. You have a bifurcation in January, February, March, and so on. Similarly, I have done it for 2015, 2016, and 2017. So मेरे पास टोटल भी है साल का और हर महीने कितनी सेल हुई एक्सेल ने कैलकुलेट कर लिया अपने आप. आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं लगाना पड़ा. एक्सेल पाइवट टेबल्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे हैव डन इट देमसेल्व्स. अगर ये काम आपको मैन्युअली करना होता है, जो लोग जिनको एक्सेल का सिर्फ बेसिक वर्जन आता है और उनको पाइवट टेबल यूज नहीं करने आते, वो हर कैटेगरी के लिए हर महीने का टोटल करते और तब उसको बनाते, और फिर आप उसके साथ प्ले अराउंड नहीं कर सकते. यहाँ आपको पता है कंज्यूमर में कितनी सेल्स हो रही है, कॉर्पोरेट में कितनी हो रही है, और होम ऑफिस में कितनी हो रही है हर महीने. अगर आपको हर डेट निकालना है वो भी निकाल सकते हो, अगर आपको क्वार्टर निकालना है आप क्वार्टर भी निकाल सकते हो. नाउ आई विल मेक सम चेंजेस एंड आई विल go to design. I don't want to have subtotals. I don't want to have grand totals. I want it to have in tabular format. Repeat all item labels and fine. So now I have for 2014 January, what is sales for 2000, everything, fine. 2015, then 2016 and 17. Now I can make a chart out of it. Say I will have a bar chart. ये बहुत बड़ा चार्ट है क्योंकि इसमें हर साल के 12 महीने हैं और 4 साल हैं, तो 48 ऑब्जर्वेशंस आते हैं. फाइन. But we can see how we can use it. I don't want to have this. I have different colors
Whatever colors we have selected earlier in sales by segment, it has been automatically taken over here. Fine. अगर आप अब यहाँ पर wait 2 minutes. अगर मैं यहाँ पर फिल्टर ये लगा लूं और मुझे सिर्फ 2015 का देखना है, and I'll click on OK. So I have data for 2015. If I wanted to have only for 2016, I have data for 2016. So you can work accordingly as per your requirement. Right now I'm selecting entire data. Fine. So this is sales by segment, month-wise. Now we will see one more chart and then we'll make a small dashboard. How we can make a map in this. Fine. So what we will do is we will go to this and again we will insert pivot table from table range, new worksheet. And rename it as maps. Fine. So what we will select is we will select, say, region. And then we will select city. Oh, sorry, state. I am selecting region and whatever states are there in particular region, it will, Excel will automatically calculate that. You don't have to do it. आपको अलग से नहीं निकालना पड़ेगा. Excel ने pivot table में कौन से central में कौन से states आते हैं, east में कौन से states आते हैं, ये automatically calculate कर लिया है. अब मैं sales देखना चाहती हूँ state wise. So this is the sales in each of the regions. Fine. Now I wanted to make a map out of it. First of all, I will do some changes. I don't want to have subtotals. I don't want to have grand totals and showing tabular format. Read all item labels. Fine. Now I will click on this and click on insert maps. Click on fill maps. It is showing that you can't create this chart type with data inside a pivot table. Please select a different chart type or copy the data outside the pivot table. Pivot table doesn't allow you to make a chart actually. So what we will do is we will just copy this data and paste it. Fine. So what I have done is I have copied the data and pasted it. And what I will do is I will write down region, state, and sales over here. Now I will select this data and click on insert maps, click on fill maps.
Wait. So I don't have to select the region. I will select state and sales. Insert maps. Fine. So you can easily see that, for example, if you hover over it, so it is showing sales for Texas. Total sales for Texas is $17,188. Maximum sales is done in California, that is 4,57,687, followed by New York, which is $31,876. And you can see this is the highest sales. It is like very easy to find out which states are doing maximum sales and which states are not doing sales, which are having the lowest sales. So the color varies from dark to light. You can change the format of your map also if you wanted to do that. It is very easy. But now the problem is, if I wanted to, if some changes are there in my main file, then it will not be reflected because it is not a, this is not a part of pivot table. Fine. So what I will do is I will click on this, and it is showing me select data. Fine. So it is selecting data from maps F$3. So it is selecting data from F column and G column. So instead of F, if I will select B, select data, and I will make changes over here. And I will select the data from here. Sorry, wait. $B, $3, $2, I suppose you know how to work on this. $C and $53. I have just changed the ranges. Fine. Now it is working on this data. What I will do is I will delete this. So now my map is working. I have already made the map and I have changed the data ranges. I have the map now. So this is how you can work on visualization in Excel. It is a very, very strong tool and you can prepare a dashboard. I have something, I will show you the dashboard which I have already made for you because otherwise it will take long time. So this is like, for example, we have created the map, sales by category, sales by segment, sales by state-wise, and home office category-wise sales, and we have placed the filters. For 2017 year-wise, we have placed the filter segment-wise, and we have placed the filter region-wise. Now I wanted these are dynamic dashboards. I wanted to have only for central, what is the sales and other things. I will just click on this. These are the regions for sales in central. And this is like sales by category, sales by segment and other things. I wanted to have only for 2017. So you can see the values are changing. I wanted to have only for consumer. So this is the sales for consumer.
I wanted to have it for home office. So this is how it is working. So this is how we can easily make dashboards and can find out, can generate actionable insights that why, for example, why sales is happening so much in this area and why sales is not happening in other areas of central region. So now we can work upon that. I suppose I have gone little fast, but the thing is we have limited time and I wanted to show you how we can generate insights from the dashboard. And now, basis on this insights, we can make some business decisions out of it. Any questions? I have gone very fast, I know that. Any questions, anyone you wanted to ask? Anything? How many of you? Yeah, Annie, tell me. Yeah, Annie, please come up. यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, आपने कुछ देर पहले स्टेप्स को डिफाइन किया था, उसमें जो लास्ट पॉइंट था डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट का मतलब कि मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है मेरे डेटा में. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हैविंग प्रॉपर इन्वेंट्री. ठीक है, एक प्रोडक्ट बिक रहा है मेरा स्टोर में, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड. ठीक है, और लेकिन मेरे पास प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं है और मुझे पूरा ये सब डेटा एनालाइज करने के बाद पता चल गया कि मंडे हर वीकडे में मॉर्निंग में ब्रेड इतनी क्वांटिटी में चाहिए और एंड आई एम आस्किंग फॉर लेस ब्रेड, आई एम नॉट स्टोरिंग इनफ ब्रेड्स. तो उसको मुझे जब ये मुझे पता चल गया तो मुझे उसको डिप्लॉय करना है, उसको मुझे नया ऑर्डर प्लेस करना है जिसमें ब्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज करना है. So deployment means whatever my learnings are, whatever I have identified, I have to use that in my making my business decision. That is the advantage of, that is the meaning of deployment. Okay ma'am, this is the, because this is the last stage to if person who is able to finding any types of work, this is the last step that you find out that's all types of problems and visualization process and data analysis and who is able to select this terms. So आप जब भी कुछ एनालाइज क्यों करना चाहते हो, कोई बिजनेस प्रॉब्लम है एनालाइज करना चाहते हो तो अपनी प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना चाहते हो ना, उसको जो भी आपने इंसाइट जनरेट किया है उसको एक्शन, किसी एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो ना. फाइन. सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ converting your data into actionable insights. It is not a last part of data analytics. Fine. okay ma'am, okay ma'am, thank you. Anyone else? किसी और को कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई क्लैरिटी? राजेंद्र जी, आप, you can take over now. Thank you, Anjali ma'am. Thank you, Anjali ma'am, for your My valuable pleasure. inputs. I got Thank to you. know many things about pivot table. So किशोर जी, आपकी आवाज कट रही है किशोर जी. मैं ये कह रहा था कि I got to know many things about pivot table. So how did you आपकी, find out the session? Hello? Hello? yeah, you are audible now. Okay. So I learned a lot of things about pivot table. I was following it very closely. How did you find the session? You can share your inputs, your feedback, and you'll be getting your certificate on your email. Sorry, you need to download it. Fine. Looking forward to
your participation in many of the learning series, which is going to be followed up. Thank you for your patience and thank you for your time. You can wind up. Yes, thank you, Anjali, for your time. Thank you. Thanks. Thank you so much. Thank you, Anjali ma'am. Okay, my pleasure.